That electric field exert force. इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रखने पे फोर्स लगता है. अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में. दिस इज फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन. फोर्स एक्सेलरेशन मिल जाएगा. द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फोर्स अपॉन मास. इट इज QE/m. Acceleration of electron मिल गया. So initially it does not have any velocity, zero. It has an acceleration opposite to electron, opposite to electric field. So it acquires a velocity v, suppose, between the two collisions. Between the two collisions, only this electron is free for motion. जैसे वो move करेगा, it will collide because there is no space available. It will collide with some of the atoms, some of the iron, and it will stop. So speed का formula v is equal to u plus at. Okay, so v is average velocity, u तो हो गया 0, it becomes E/m into tau. अब ये किसी एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी थी, जो इसकी एवरेज वेलोसिटी होती है, दैट एवरेज वेलोसिटी विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रॉन. So when you take the average, it will be right side the average time of collision. Sam, you understood this part? Yes, sir. Right. So because this time between two collision is not fixed time, because might be colliding with the second atom quickly speed, then but then there is a gap. So it तो is सर t1, इसको हम स्पेसिफिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्यों बोलते हैं, नॉर्मल वेलोसिटी क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली नहीं चल रहा ना, ये जैसे चलता है वैसे कोलाइड होकर रुक जाता है. इट गोज and then ओके it सर. stops again, then again goes, then it stops. That's why it is called drift velocity. The average continuous velocity नहीं है इसके पास, because there is no space available for this constant motion. अंदर ये solid metal है, it's highly compact and there is no space available, so therefore electrons will collide. So when you take the average, this average will become drift velocity. Average का symbol कुछ ऐसे use करते हैं, E, charge of electron, electric field, and that will be constant. Charge on electron is constant, electric field जो battery में apply की, that is constant, and average of time is relaxation time. Right? Average velocity of electron is drift velocity, and average time of collision is called relaxation time. So यहाँ से ये formula आ गया था that drift velocity of electron will be capital E upon m times tau. जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करता है, सपोज ये पहले कोलाइड हो गया T1 में, फिर रुक जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम मूव कर रहा है, this is colliding next time T2, T3. So electron is not moving continuously. It starts from A, goes to point B, and then it stops. Because of collision, it stops at B. Again, it stops at C because of the second collision, third collision, and so on. Average time of collision is called relaxation time, and that relaxation time is represented by tau. So this is the formula for drift velocity. और इस फॉर्मूले को हम अगर वापस पुट करते हैं इन द फॉर्मूला ऑफ करंट, तो हमने J कैलकुलेट किया था. J इज करंट पर यूनिट एरिया. What J is called? Current density. Current density is current coming out per unit area in perpendicular direction, that is NEVD. Substitute the value of VD, that is E tau by M into capital E. Tau को क्या बोलते हैं? Tau is the average time of collision, that is called relaxation time.
Average time of collision is called relaxation time. It is NE square tau by M times capital E. This we derived. Current density is some constant times electric field, and this constant is called conductivity of that material. Conductivity ज़्यादा means it will be a better conductor. It will allow more current to pass. सबसे better conductivity किस metal की होती है? Which metal is the best Sir, conductor? silver. Gold. Silver. Silver is the best conductor. Yes. Silver Sir? and then copper. Yes. Sir, the time between two successive collision is called relaxation time, right? Average time between two systems. Yes. And sir, the distance between two successive collisions है It's उसके लिए है called क्या mean कुछ? free path. Yes, that's also called mean free path, but that is not here. I mean, any valid quantity. वो जब हम gases के लिए करते हैं, because gases molecules also move randomly in all the direction, and that motion also gives. That motion is also like the Brownian motion. और उस case में that length average distance covered between two collisions is mean free path. I mean that term is not much relevant here. But current density को हम electric field कैसे लिखते थे? Electric field is equal to V by R. So here it becomes V by N. Current density आ गई I upon A sigma. E is V upon L. Substitute the value of current density as current per unit area and substitute the electric field as V by L. So Ohm's law क्या बोलता है? Ohm's law is the relation between potential and current. Potential difference V इसमें एक साइड दिख रहा है और राइट लेफ्ट हैंड साइड में करंट. सो V और I के बीच में जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है this conductivity is sigma. Now if we get the relation between V and I from this, so V को एक साइड रखते हैं, करंट को बाहर निकाल लो. This will be 1 upon sigma L by A times I. 1 upon sigma will be another constant जिसको बोलते हैं resistivity, rho L by A times I. Here rho is inverse of conductivity which is called resistivity of the material. ये शायद आपने CBSE में पढ़ा होगा. R is rho L by A. You have done this topic yet? Yes, sir. Okay. So V is equal to rho L by A. इसमें जो rho है that is called इनवर्स ऑफ कंडक्टिविटी. तो फॉर्मूला वाइज निकालोगे तो m डिवाइडेड बाय n e स्क्वायर टाउ आ जाएगा. दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ दैट मटेरियल. दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल. और ये रो एल बाई ए, दिस ओवरऑल टर्म इज कांस्टेंट फॉर एनी गिवन वायर जिसकी लेंथ कांस्टेंट हो, एरिया कांस्टेंट हो, देन दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. V is proportional to I and this constant is called resistance. The constant of proportionality R is rho times L by A is called resistance of the wire. तो ये formula आपने शायद 10th में ऐसे directly पढ़ा होगा. We proved this formula where does the resistance comes out to be rho L by A. So we have derived Ohm's law with the basic concept of drift velocity, that electron moves on average because of the electric field applied, and that gives average velocity as drift velocity. Current और drift velocity का relation निकाला हमने, फिर उससे current density का. From that we got relation between potential and current. So potential applied is directly proportional to current passing through it, and the constant of proportionality is called resistance. Ohm's law का statement क्या है? Can anybody tell? Do you remember the statement of Ohm's law?
Yes, Ohm's law statement, anybody? Ohm's law. Ohm's law, अरे the standard definition है बेटा, और ये एग्जाम में आता भी है. Under the same physical condition, under the same physical condition means same length, same area, same temperature. मतलब हो सकता है आपकी बुक में या एनसीईआरटी में आपकी डिफरेंट डेफिनेशन लिखी हो, but this is the standard definition that we use at the higher level. Under the same physical conditions such as length, same length हो, same area and same temperature, the potential difference applied across a wire is directly proportional to applied across a wire is directly proportional to current passing through it. Current passing through it. So this is the statement of Ohm's law. अगर बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं, same length है, same area, then then the resistance volt V is directly proportional to I. जो potential difference हम किसी वायर में लगाते हैं, that will be directly proportional to the current passing through it. Alternate words is that the current passing through a wire is directly proportional to potential applied, because agar V is proportional to IA, so I will also be proportional to V. So when we increase the potential of the battery, there will be increase in current, but the ratio of V by I will be constant. Length of this wire is L and the area of wire is A. So according to Ohm's law, for any conductor, metallic conductor, the ratio of V by I is constant. If we double the potential, double the EMF of the battery, then current will be double. Ratio will be constant. V by I is R, the ratio of potential. But this is followed not for all the conductors. This is followed only by few conductors, only by the metallic wires and all. जैसे हमने बहुत सारे एग्जांपल किए थे initially, LED bulb, CFL, they all do not follow the same law. Only few conductors follows the Ohm's law, and those are called ohmic conductors. Ohmic conductors are those which follows the Ohm's law, where the potential is directly proportional to current. So the graph between them will be a straight line graph. V by I is constant, and that slope of this line will be giving the resistance. Slope of line को हम tan theta से भी लिख सकते हैं. Tan theta is the slope of line. So this slope, जिसका slope ज़्यादा उसकी resistance ज़्यादा, is equal to resistance of the wire when potential versus current is plotted. So slope कैसे निकालते हैं हम किसी भी straight line की? Slope y is equal to mx plus c, and which can be calculated by tan theta. For ohmic conductor, the potential applied is directly proportional. For ohmic conductor, potential is directly proportional to current. This is for ohmic conductors like the bulb or the metallic wires. For non-ohmic conductor, potential depends upon current, but it is not directly proportional. It is not directly proportional to the wire. Okay, so Ohm's law is only when the body is at same length, same area, same temperature. अगर बाकी सारी condition same है, then potential will be directly proportional to current passing through it. The ratio of potential to current will be constant.
and that constant is called resistance of the wire. So resistance की unit होगी volt per ampere, which is called ohms. So when 1 volt potential gives 1 ampere current, that means the resistance of that wire is 1 ohm. On applying 1 volt potential, if there is a 1 ampere current flow, then that particular wire resistance is 1 ohm. The resistances or the wire, the devices which do not follow the Ohm's law means where potential is not directly proportional to the current applied are called non-ohmic conductors. Non-ohmic conductors are the conductors which do not obey the conductors which do not follow the Ohm's law. So like V versus I graph will be a curved graph. ऐसा कुछ ग्राफ होता है for diode. LED के लिए आप बोल सकते हो. This is for the diodes. This current versus potential graph is different. कुछ gallium arsenide diode के लिए होता है. Current versus potential भी straight line होना चाहिए. This is like this. So these LEDs, they do not follow the Ohm's law, or in fact, the all semiconductor devices, semiconductor में जैसे all LED bulb, LED televisions, semiconductor devices do not follow the Ohm's law. Right, so Ohm's law is that potential should be directly proportional to current, but in the semiconductor devices, it increases exponentially. It increases initially, it goes increase slower, but when the potential increases, it increases much rapidly. Right. So the resistance is constant for a wire and resistivity is constant for a material. जैसे कॉपर है, कॉपर फॉर अ गिवन टेम्परेचर उसकी रेजिस्टिविटी हर जगह पे सेम होगी. रेजिस्टिविटी इज कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर और रेजिस्टेंस विल बी कांस्टेंट फॉर अ गिवन वायर. मतलब जब तक लेंथ कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस is R is equal to rho L by A. It also depends upon the dimension of that, how long that wire is and how thick that wire is. So अगर लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, अगर एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगी. We want less resistance wire because जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतनी ही इजिली उतनी ज्यादा करंट फ्लो होगी. रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है वैसे? क्वालिटेटिव डेफिनेशन, रेजिस्टेंस it represents the opposition caused in the flow of electric current. The opposition caused by the resistance is the opposition caused by the wire in the flow of electron or current. लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा. So this will be proportional to length upon A. Proportionality हटाते हैं तो जो constant आता है, that constant is called resistivity of that material. Rho is called resistivity of material. Resistivity is constant at a given temperature. Temperature change constant for a material at a given temperature. 1 मीटर का कोई कॉपर वायर है और 10 मीटर का कोई कॉपर वायर है. They have the same resistivity but not the same resistance. The resistance changes with change in the physical dimension, but the resistivity depends only upon the temperature. Right?
Okay, so resistivity calculate, resistivity will be given in the question, or resistance calculate करने के लिए R is equal to rho times L by A, it is in ohms. So for example, अब हमें इसमें length कौन सी वाली लेनी है जिसके across current flow हो रही है, the length across which the current is passing through it, and area will be that area through which current is entering into the conductor. इसका क्या मतलब है last statement, अगर suppose there are multiple possible, L is the length across which current flows, the length across which current flows, and A is the area through which current enters, through which current enters. अब जैसे सपोज अगर हम कोई क्यूबॉइडल शेप का वायर ले लेते हैं, इन एनी क्यूबॉइडल शेप, like this, and suppose its length is A, its breadth is B, and this height is C. और suppose इस वायर की resistivity हमें पता है, the resistivity of this wire is rho, resistivity of material is rho. अब अगर हम ऐसे बिना पॉइंट्स को स्पेसिफाई किए इस क्वेश्चन में रेजिस्टेंस पूछते हैं, दैट इज ए इनकम्प्लीट क्वेश्चन, बिकॉज में हम कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं. वी कैन कनेक्ट दिस फ्रॉम एनी टू फेसेस. So if suppose we have to find the resistance of this cube shaped cuboidal wire, we have to specify where we are going to connect the battery. First case, suppose taking between these points, between P and Q. The resistance of this wire across P and Q across this wire only, if we calculate, तो हमें रेजिस्टेंस के लिए चाहिए रेजिस्टिविटी which is constant. अगर करंट यहाँ से जा रही है, then length across which current enters is A, and area through which current enters is this rectangular area. इधर से करंट एंटर होके बाहर निकल रही है, so this area is how much? Length into breadth, it will be B into C. हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, बट रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में दैट लेंथ शुड बी द लेंथ across which the current flows. A is the area through which current enters. R is equal to rho times L by A. बेटा ये समझ आ गया? Why use length as A and area as BC? Because जिस फेज के थ्रू करंट एंटर कर रही है उसका एरिया BC है, और जिस लेंथ के क्रॉस करंट फ्लो कर रही है दैट लेंथ इज A. Now suppose if we change the orientation, हमें इसी क्वेश्चन में इसी वायर का, but battery has to be now connected across the other faces, not this. Now suppose if I ask the resistance of the same wire between point X and Y, it will change now. कर्ष Yes, sir. समझ आ रहा है बेटा? Yes, sir. क्या होगा फिर इसका आंसर बताना, एक्स वाई के क्रॉस So, into L by area. L length across which current flows. कितनी लेंथ के थ्रू ये पास हो रही है? What is this length? कर्ष, ये जो वायर में करंट जा रही है वो कितनी लेंथ के थ्रू पास हो रही है? What is this length? C. C, yes, sir. It can C be any variable. divided by area through which current enters is now this phase. इधर से एंटर होके दूसरी तरफ से बाहर निकल रही है, so that will be length A into breadth B. Yes, sir. कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है ना? मैं इसने Yes, sir. मैंने Concept समझ आ रहा है, but उसमें variables मुझे लगा कि आप दोगे. इसमें
फिर से बोलना, आवाज क्लियर नहीं हुई, क्या कह रहे हो? सर वेरिएबल्स का थोड़ा कंफ्यूजन था कि मुझे खुद लगाना है कि आप कुछ वैल्यू दोगे। R is equal to rho into L by A. So हमें L चाहिए, लेंथ जिसके थ्रू वायर में करंट पास हो रही है, डिवाइड बाय A. We will have to find that area across which the current enters, through which the current enters. So length is पहले वाले केस में the length across which it goes is A. Second one हमने x y में कट कर दिया, so it is C. And now the third is, suppose if we have to find the resistance. If you have to find the resistance again along that third dimension. एक डाउट है, बोलो बेटा। रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट नहीं रहेगी, मतलब एक सेम वायर के लिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। रेजिस्टेंस डिपेंड करती है हमने किस तरह उसको कनेक्ट किया है। It depends upon length, it depends upon area, it depends upon how that current enters. ठीक सर। यस सर। So same wire, when length is A, across A current is passing, then it has different. जब हमने इसी वायर को घुमा के 122 में कनेक्ट करके then the length through which basically हम कर क्या रहे हैं, पहले वाले केस में बैटरी इधर लगानी है, that has different resistance. In the second case the battery is connected between X and Y like here. So wire तो same ही है but connection change हो गया. So if you have changed the orientation, you have changed the effective length, you have changed the effective area also. अभी suppose तीसरा ले लेते हैं हम between these two point. थोड़ा सा 3D में है, समझ रहा है ना किसकी बीच की बात हो रही है? सर ये 3D वाले मतलब थर्ड फेज के अक्रॉस। तो इसमें जो करंट पास हो रही है वो कितने लेंथ के थ्रू पास हो रही है? दैट लेंथ इज B and the current enters through this phase. इसको हम कुछ और कर लेते हैं। AB XY था और PQ था। Now this is suppose AB. Find the resistance of this same wire across AB. Rho length is B and that area through which current is entering is AC. AC. Rho into B by AC. The area through which current enters is rho into is A into C. तो इसीलिए मैंने ये एग्जांपल लिया था जानबूझ के, so that you can see the difference. एक ही वायर का रेजिस्टेंस डिफरेंट हो सकता है बिकॉज उसका जो इफेक्टिव कनेक्शन है सर्किट में दैट हैज चेंज्ड। जब हमने ए लेंथ के क्रॉस करंट पास किए तो उसको ज्यादा डिफिकल्टी होगी चलने में बिकॉज लेंथ ज्यादा है, so that will have more resistance. But is connected between X and Y, that thickness is less C, there will be less effect of the resistance. समझ गया ना? Aditya, you got your answer? Length is constant Yes, only under the same physical condition when the length is same, area is same. But here when we change it, it is not having the same, it is not having the same length. The effective length has changed. Okay, ये तो हो गया for this cubical wire. Second question, कुछ तो बेसिक से आपके स्कूल के इसमें भी है, लेंथ को डबल करें, एरिया को हाफ करें, what happens to the resistance? किए ऐसे क्वेश्चन? If length is doubled and radius is halved, what is the change in the resistance? Length of wire is doubled and radius is halved.
find the change in resistance. पहले की लेंथ अगर L है और रेडियस R, सेकंड वाले केस में लेंथ इज डबल्ड एंड रेडियस बिकम्स R by 2. You have to find the change. अगर पहले का रेजिस्टेंस है R, तो दूसरे का रेजिस्टेंस कितना है? सॉल्व करिए. Find the change in the resistance. Yes, what is the answer? What happens to the resistance? How many times? Aditya? 8 times. 8 times. Initial resistance is rho L by pi R square. New resistance is rho into 2L divided by pi into R by 2 square. तो ये 4 और नीचे का 4 ऊपर का 2. That becomes 8 times rho L by pi R square. So new resistance will become 8 times the initial resistance. Resistance की length अगर double करते हैं और radius को half करते हैं, then the resistance becomes 8 times. Okay, but इस case में हमने इसको this is not by stretching of wire. Will be case इसमें हम wire को खींच के double करेंगे. This is the we use another wire जिसकी length double है. It is not the same wire stretched to double its length. उसको हम अलग से देखेंगे. Next question is suppose एक hollow cylinder है. Find the resistance of this hollow cylindrical wire. Inner radius is R, outer radius is 2R. Length is L and resistivity is rho. Calculate the resistance of this hollow cylinder. Inner radius is R, outer radius is 2R and length is L. And given that the resistivity of material is rho. So the area through which current is now entering, it will be outer area minus inner area. The resistivity is constant. वो फर्क नहीं करता कि वो hollow cylinder है, solid cylinder है. For a given metal, it will be same. For a given material, it will be same. Length is L, but the area has changed. Area is not the whole area. Area is outer minus inner. बीच का hollow portion है उसको हम subtract कर देंगे. It will be rho L divided by pi times 2R square minus R square. Rho L by 3 pi R square. This is the area of 3 pi R square is the area through which current is entering into this wire. और इसमें हमने इन दोनों points के बीच में calculate किया है across the ends. तो ये same formula है भाई rho L by A, but area जिसके through current enter हो रही है
that area will be outside minus inside because अंदर ये hollow wire था इसलिए. रेजिस्टेंस डिपेंड करता है ज्योमेट्री पे, मटेरियल पे और मटेरियल के टेम्परेचर पे. इफ यू चेंज द डायमेंशन, इफ यू चेंज द ओरिएंटेशन, देन आल्सो रेजिस्टेंस विल चेंज. जैसा हमने फर्स्ट एग्जांपल में किया, ड्यूरिंग इन दिस क्यूबॉइडल शेप देयर इज अ hollow cylinder में आउटसाइड माइनस इनसाइड दोनों का एरिया सबट्रैक्ट करेंगे, दैट विल बी द एरिया थ्रू व्हिच. उसके अलावा और कुछ कुछ केसेस हो सकते हैं, वेरिएबल हॉलो स्फीयर भी हो सकता है, बट उसके लिए थोड़ी इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी. सो वी हैवंट डन द इंटीग्रेशन. In this stage 2 we will do the integration and differentiation type question also. Right, next is stretching of wire. जब हम किसी वायर को स्ट्रेच करके लेंथ डबल करते हैं, so if we are increasing the length, next concept is stretching of wire. Same wire which has length L, suppose cross section area is A. इस वायर को अगर हम खींच के और इसको हम डबल कर दें या ट्रिपल कर दें, let's say, so in general suppose we are stretching this wire and making the length to become n times. इसकी लेंथ अगर L से इंक्रीज होके n times L हो जाए, then what happens to the resistance of this wire? सर अगर स्ट्रेच करेंगे तो रेजिस्टिविटी तब चेंज होगी या तब भी सेम रहेगी? रेजिस्टिविटी तो सेम ही रहेगी बिकॉज मटेरियल सेम है. ओके सर. If wire is stretched to n times its initial length, पिछले वाले में हमने दूसरा वायर ही लिया था, अभी इसी वायर को पकड़ के खींच दिए, so length n times हो गई, n में भी डबल ट्रिपल. Wire is stretched to n times its initial length. Find the new resistance. Find the new resistance of wire. So अगर हमने इस वायर को n times लेंथ में इंक्रीज कर दिया, तो इस वायर की थिकनेस कम हो जाएगी. Why? Because मटेरियल तो सेम ही है, मास सेम है, सो वॉल्यूम भी सेम रहेगा. So if So we sir, the radius would be divided by n. नहीं, रेडियस नहीं, एरिया will be divided by n. Because it is the same material, so volume will remain same, mass will remain same. So जितना इसका initial volume था, same must be the final volume. Volume remains constant. A into L will be A dash times NL. Area into length होता है formula for the volume, so A dash becomes A by N. अब ये जो A by N है, इसमें हमें Sir, बोलो बेटा. the new resistance would be rho n square L upon A. करेक्ट. एरिया बिकम्स 1 अपॉन n टाइम्स. अगर हम लेंथ को डबल करेंगे, एरिया हाफ हो जाएगा. लेंथ को 3 टाइम्स करेंगे, एरिया 1/3 हो जाएगा. सो द न्यू रेजिस्टेंस ऑन स्ट्रेचिंग दिस वायर, न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑन स्ट्रेचिंग. अगर इनिशियली इसका रेजिस्टेंस था R, सो न्यू रेजिस्टेंस विल बी रो. लेंथ हो गया n into L और एरिया हो गया 1 by n. That become n square rho L by A, and rho L by A is R. So the new resistance becomes n square. यानी अगर हमने लेंथ को डबल किया तो 4 times, लेंथ को ट्रिपल किया तो 9 times. Resistance becomes n square times on increasing the wire by stretching. अगर हमने वायर की लेंथ इंक्रीज की है by stretching, then the resistance will become n square times its initial length, initial resistance. N square times initial resistance.
resistance becomes n square times initial resistance on stretching the length. So length को अगर हम 3 times करते हैं, length को अगर triple करोगे तो resistance हो जाएगा 9 times. Length को double करोगे तो resistance हो जाएगा 4 times. Right? Yes, sir. Okay, so I'm giving few questions from this handout worksheet. उसके क्वेश्चन जो भी हमने आज के टॉपिक पढ़े इन पे बेस थोड़े से न्यूमेरिकल्स करेंगे. ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले थोड़े कैलकुलेटिव ज्यादा है, अभी के लिए छोड़ देते हैं. अभी के लिए छोड़ देते हैं, we'll do it later. या ठीक है, कर लेते हैं. There are few questions, so I am just writing in short form this question. Question says a wire of length 5.8. This is a wire of length 5.8 meter. Length 5.8 meter, diameter 2 millimeter. So I'm writing directly the values which is given in this question. In a wire, the length is 5.8 meter. Its diameter is 2 millimeter. And it carries a current of 750 milliampere when potential applied is 22 millivolt. Current is 750 milliampere, potential applied is 22 volt. And question says that the drift speed is found as 1.7 into 10 to the power minus 5 meter per second. These information is given in the question. Calculate drift current density and free electron density in the metallic wire. First आपको calculate करना है current density which is J, and second you have to calculate the number of free electrons per unit volume in the metallic wire. Number of free electrons per unit volume, small n. So current density का formula क्या होता है? Current density is I upon A. करंट पता है और हमें डायमीटर पता है, डायमीटर से हम रेडियस निकाल के और उसकी, so we can find current density as I by pi r square. सॉल्व करके आपको वैल्यू निकालनी है. सेकंड वाले में क्या करेंगे? When we have current density is NEVD. Small n is the number of electrons per unit volume जो हमें कैलकुलेट करना है. Yes, what is the current density? E here is charge of an electron, VD is drift speed. Yes, what is the current density value? ये वैल्यू भी ऐसी जो कैंसिल आउट हो जाएगी शायद. इसमें पोटेंशियल का क्या रोल है वैसे? इज पोटेंशियल रिक्वायर्ड? इसकी तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी शायद सॉल्व करने के लिए. So 238.8. आपने मिलीमीटर को मीटर में चेंज कर लिया है? शायद नहीं. No. Yes, करंट सर ये वाला क्वेश्चन आप एक बार प्लीज करके दिखा दो, फिर नेक्स्ट वाले में थोड़ा इजी हो जाएगा. अच्छा ठीक है. कैलकुलेशन ही है बस. J is equal to I upon area. Current per unit area is called current density.
So ये 750 मिली एम्पेयर है, मिली को हम लिखते हैं 10 to the power -3. Pi is 3.14. Radius becomes 1 millimeter and 1 millimeter is 10 to the power -3. Pi is 3.14. Yes. मिली एम्पियर्स दे रखा है और रेडियस भी मिलीमीटर्स में दे रखा है, तो चेंज करना जरूरी है। बिल्कुल चेंज करना जरूरी है। यस, नीचे रेडियस का स्क्वायर है, ऊपर करंट का केवल एक ही लीनियर पावर है। See -6 ऊपर प्लस -3 become 10 to the power 3 and this on solving will approximately come out 2.4 into 10 is to power 5 ampere per meter square approximately। थोड़ा और कुछ डेसिमल्स पे आएंगे टर्म। So should it not be -5? नहीं -5 है ना, नीचे -6 है, ऊपर -3 है, नीचे वाला माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, दैट बिकम +3। जस्ट ऊपर 10 to the power -3 है, नीचे -3 का स्क्वायर करोगे तो -6 हुआ ना। Yes, sir. 10 is to power -3 divided by 10 is to power -6, it becomes 10 is to power +3। और ये 750 by 3.14 से 240 समथिंग आ जाएगा कुछ। 240 into 10 is to power 3 which is 2.4 into 10 is to power 5। सेकेंड वाले में कैलकुलेट करना था करंट डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। This is 2.4 into 10 is to power 5. Electron is 1.6 10 is to power -19 and drift velocity is 1.7 into 10 is to power -5. This you have to solve. ठीक है, तो इसको आप आराम से सॉल्व करें ना। ये कुछ आ जाएगा 8.8 into 10 is to power 28। तो बेसिकली you have to just pick the right formula and substitute the value per meter cube। Done? Okay, one more question। बेटा ये समझ आ गया ना? Understood? Yes, sir. 8.8 into 10 to the power 28. हाँ, तो मेथड समझ में आ गया ना, बस आपको केवल फॉर्मूला यूज करना है और उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, दैट्स इट। ओके, वेरी नाइस। Okay, next question is that the number of electrons per meter cube in copper is 8.5 into 10। तो again मैं directly value लिख रहा हूँ what is given, not the language। Number of electrons per meter cube is 8.5 into 10 is to power 28 per meter cube. This is given in a copper wire. Length of wire is 25 centimeter and diameter is 2 millimeter. Carries a current of 1.55 ampere. Find the drift speed of the electron। Find the drift speed of electron। Again, it is I is equal to NeAVD. I is equal to NeAVD। लेंथ की कोई जरूरत
Yes, beta done. What's the answer? I is equal to NEAVD. इसमें भी जो length है that is not required for solving this question. So there will be some extra information given that you have to ignore. Current given है, small n given है, E is 1.6 10 to the power minus 19. Area के लिए हम फिर से calculate कर लेंगे pi into r square. सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं होगी. अच्छा, okay, sorry. Yes, this was the question. I is given, n is given, A is given, E is given. Drift velocity हमें निकालनी है. इसमें length का कोई use नहीं है. Again, length is not required here. Okay. ठीक है. I think हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कुछ सिंपल क्वेश्चंस कर लिए. बेसिकली ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादा मुश्किल वाले नहीं. अगर हमें चार्ज कैलकुलेट करना हो, चार्ज पास्ड इन टाइम t, चार्ज पास थ्रू अ वायर इन टाइम t, q कैलकुलेट करना हो, देन since I is equal to q by t, so q will be equal to I into t. The total charge passed will be current into time taken. It will be I into t. I is the current through the wire and t is the time. For which current is passed. I current passes for time t, q is equal to I into t. Right? इसी को हम ग्राफ से कैलकुलेट करें तो कैसे आएगा? q अगर हम करंट वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया निकाल लें, लेंथ इनटू विड्थ, the total charge passed is area under I versus t graph. Area under I versus t graph. Current और टाइम ग्राफ का अंदर का एरिया निकालेंगे. That will also be equal to total charge passed. This is the another formula जो करंट से रिलेटेड है. अगर चार्ज पता हो और टाइम कितने टाइम में पास हो रहा है तो करंट निकाल सकते हैं. Opposite, if we know the current, we can find out the total charge passed. Right? Okay. I think अभी के लिए इतना ही. We did current. We did drift velocity. We proved the Ohm's law in today's class. Ohm's law से हमने resistance का formula derive किया और resistance को कैसे apply करेंगे, that we did in today's class. Next class we will see the combination of resistances. Combination of resistance, series and parallel, that we will see in next class. इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो एनटीएससी वाली बुकलेट के, जो पहले मैं आपको दे रहा था वो थोड़ी ज्यादा है इसमें. that we will use in the second stage. From the NTSC booklet I will share you the questions from here. Right? Okay then. ठीक है. Okay, thank you. थैंक यू सर. बाय सर. सर ये PDF भेज दोगे आप ग्रुप में? हाँ बेटा, मैं बस वही भेज ही रहा हूँ. ओके सर, थैंक यू.